Good morning, students. Good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Students are still joining. Good Our morning, speaker. ma'am. Good morning. Our speaker would join at 10:25. We'll start the session sharp at 10:30, right? Excited for coming on 11th? Are you all excited to come to college on 11th? Yes, ma'am. Yes, ma'am. We are also excited to meet you all. Awesome. Awesome.
आस ग्रुप के बंदे एजुकेशन में मंदे थे बैग गले में टांग्या ना लगा फांसी आले फंदे थे रैली लो मैं भेज देती हूँ स्पीकर की लिस्ट। Good morning, students. Let me tell you the schedule for today. Dear students, hello. Yes. The first speaker is Shri Eldrin Castellano ji. He is CEO of O Inspire, and it is the Apple Trainings Company, training partner of Apple. Then at 11:30 to 12, we have KC Gupta sir. He is former director, Defense Western Command. Then from 12 to 1, we have Miss Madhura Bagchi. She is Global Learning Advisor at Genpact. Then 1 to 1:30, we'll have a lunch break. 1:30 to 2:30, we have Rashmi Saha. She's a TEDx speaker. We'll end the session at 2:30, right? So you have to be here. You have to attend all these sessions.
They will create an impact on you. So these are very good speakers and will guide you on various topics so that it will help you in making your career. So speaker is about to join us and we'll start at sharp at 10:30. Till then, if you have any kind of doubts, you can ask questions to me on chat. And guys, please, it's my humble request. Please do not write personal chats. Like, do not discuss anything personal on this chat, Zoom chat. College timings are from 9:30 to 3:30. Transport class groups. Okay, I'm sharing the transport in charge number. So you can contact him for the transport related issues. बेटा क्लास ग्रुप्स आर गेटिंग फॉर्म्ड और बन भी गए हैं, आपको ऐड कर रहे हैं. Well, good morning, ma'am. Am I audible? Okay, good. So I'm glad you give me all these feedbacks, and I'm sure that the session will go well. Good morning, sir. Good morning, sir. How are you? I'm good, ma'am. I'm good. Very well. So we'll start the session at 10:30. Students are still joining. Sure. Yes, sir. Meanwhile, I will just, I was just checking the audio and checking the video quality. Okay, sir. Yes, it is clear. Audio and video both are clear. Excellent.
Yes, sir. And dear students, our speaker have joined us. We have with us our distinguished guest, Mr. Eldrin Castellino. Sir, I welcome you to the online orientation program. And Thank you. students, before sir shares his valuable insights on the role of a data scientist, let me give a brief introduction about sir. He holds a master degree in marketing from Jamna Lal Bajaj Institute of Management Studies, Mumbai University, with more than 2 decades of experience in technology sales and marketing. His public speaking and communication skills have made him successful in identifying and creating new opportunities in emerging markets and sectors. He holds a dozen technical certifications in the field of electronics, machine learning, and quality assurance. In 2021, Sir published 2 books on Kindle and he is currently working on artificial aerial empty intelligence in publishing and online distribution. So we have a very renowned person with us. He'll give you very good insights about the role of a data scientist. So I request you, sir, to guide our students on the topic. Over to you. Excellent. Thank you, ma'am. Good morning, friends. You know, my name is Aldrin Castellino. A lot of them have this challenge pronouncing my name. Some call me Aldrin, some call me Aldrin. So, whatever seems comfortable is fine with you. Some people don't even know how to pronounce my name. So I give them an example. Aapko dawai pata hai na, Coldrin. So you say Coldrin, Aldrin. So it becomes easy. Okay. All right. So my topic today is a role of a data scientist. The objective of even getting through you this topic is so very important because a lot of them currently do not know what is data analytics. Leave alone knowing कि आपको वहां पर क्या काम करना है. So I'm going to be speaking mostly in English. My Hindi is a little poor. Is that okay with all of you? I hope. Yes, sir. Yes, sir. Great. Yes, sir. Excellent. And you can, in case you have any queries, you can kindly put it on the on the chat group so that I'm able to. And if any one of you has a repetitive query, then kindly avoid because it will start getting into too many layers of so they'll spend a lot of time. So we'll also I would like you to look at the way I am conducting this virtual presentation is because this is how a virtual presentation is also being created. You cannot keep scratching your head. You cannot keep touching yourself while you're actually doing a presentation. So there are some etiquettes that you also need to inculcate, maybe in the future. Once you start getting onto a job, you'll have a lot of virtual meetings that you'll be doing. Hence, the kind of words that you use, the kind of language, the kind of, you should ensure that there is no background sounds coming in or noise that's coming in. So you have to ensure a lot of these things. All right. So I've tried to keep the sound minimal. However, let's see if I'm able to, do a fairly good task out here. So I will also share you a presentation. All right. So I'll share my screen with you. And yes, are you able to see the screen? Yes, sir. Yes, sir. It's clear. All right. Excellent. So, now the first slide is there are 2 people. There is a boy, there's a girl, and their heads are missing. They are headless. Any reason why I've kept this slide as a headless slide? इसका मतलब क्या है कि आपको ये पता है कि there is a boy, there is a girl, but ये भी पता है कि इनका सर नहीं है. So any particular reason why would that be? So anyway, we'll get to know this while we go ahead. So I'll take you to the second slide. So if anyone's आज किसका बर्थडे है तो हम बर्थडे का केक भी काटेंगे.
So there are 3 layers of cakes out here. And right, the 3 layers of cakes. And in that, you'll also see that the bottom layer is something called data management. The second layer is business intelligence. And the third layer is insights. All right. I've also given a situation where on the extreme right, okay, this is the elevation, soldiers. Then the second layer is scientist. And the third layer is analyst. Now you will see there are a lot of jobs coming for seeking data analyst. So before you become an analyst, you have to go through the process of becoming a soldier. Very, very important. Okay, you cannot become a data analyst directly. So the session also will take you to the progression path of what a career looks like for a data scientist. So if you want to become a data analyst, you have to complete 8 years after you graduate, which means that you are here in your 4-year program or a 3-year program. Your first 1.5 years, that is 18 months to 2 years, you will be a soldier. For the next 3 years after that, you will be a scientist. So our objective today is to ensure that you become a scientist. And only when you become a scientist will you actually take 5 more years to become a data analyst. That's how it's going to be. All right. So this has to be very clearly etched into your minds for a simple reason that a lot of people make this error that I want to be a data analyst. You cannot be a data analyst without going through the process of being a soldier, being a scientist, and finally becoming an analyst. All right. Now, if you are a data soldier, it is very clear that you need to know a little bit on data management. After you have understood what data management is all about, only then you come to then understand the uses of the tools and the business intelligence softwares which are available in the industry. Okay. And finally is insights. Now, insights needs experience. And when I'm saying experience, it is just not experience of working as a working as a data scientist or a soldier. Your experience is identified as domain expertise. All right, which I will take you to the next slide. All right, so very clear. Now, here I've already mentioned to you that data management is the bottom layer, business intelligence softwares or tools is the second, and finally is insights. All right. Now, before I go to the next slide, I would like to ask you all a very basic question. You all can respond on a chat, or you all can think about it. The first one is, now, obviously you have some expectations. Okay, I will do computer science engineering, I will do some kind of engineering, or I will do computer applications in 3 years and 4 years, and then I will graduate, and finally I will get a job, right? But before you get a job, do you even know, जब हम क्रिकेट खेलते हैं, जब हम फुटबॉल खेलते हैं, हमें पता होता है रूल्स ऑफ द गेम, राइट? अगर इफ इट गोज बाउंड्री के बाहर चला गया तो हो गया 6. LBW का मतलब क्या है? You know the rules, right? आपको पता है. जब आप when you watching a television program or you watching on your mobile, you actually tell, अरे यार, this guy is, इन्होंने अच्छा बैटिंग नहीं किया, इन्होंने अगर ऐसे बैट किया होता ना तो इस तरह होता, right? So it's obvious that you should know the rules of the game. So the industry rules for a data scientist is something like this. They ask you for 3 things. First is that you need to be a degree holder. मतलब आपका graduation होना चाहिए. All right. Second is where you should have a mastery over a subject. Mastery over a subject means that you should either be
let's say, let's say if you're not a graduate, you would have been an electrician, a driver, a plumber, something that जहां पर आप बोल सकते हो कि ये मेरा स्किल है, मैं इसमें, I am good at it. So similarly, with technology also, you need to mention that you have control or command over that particular skill. Okay, that's the second requirement of the industry. The third requirement of the industry is you should have at least a minimum, let me share with you, a minimum of 1 year of experience. Because when you go to monster.com, indeed.com, or naukri.com, and you apply for a job out there, you will see that they may tell you looking for data scientist or data analyst with 4 years of experience, data scientist with 2 years of experience. And then they write below, freshers may apply. Freshers may apply, right? जरूरी नहीं है कि आपको नौकरी मिलेगा, but आप अप्लाई कर सकते हैं, right? Now, the very fact they say that freshers may apply, it ideally mean that वो आपको मना नहीं करना चाहते, but आप वैसे भी आपको नौकरी देगा नहीं. So you have to be very clear. The rules of the game clearly says, the industry rule, that, and it can be not only for data an analyst or scientist, it can be for anything. It can even be for web applications, mobile applications, it can be for software testing. The same rule applies. So number one is where you need to be a graduate. Second is that you need to have a mastery over a skill. All right. Third is you need to have at least a minimum of 1 year of experience. All right. Now let's go to the next part. Now the next part is also very clear, that how do we achieve these possibilities? So before you get into, before I get into data as a subject, first I would like to explain to you technologies. Now, everyone talks about artificial intelligence, machine learning, blockchain. These are all great technologies, IoT, Internet of Things. Everyone talks about great technologies. But is it possible, is it that easy to acquire these technologies? Right? So you have to be very careful. So there are technically 5 technologies that are available in the industry. Just 5. अगर आप इस 5 पर एक भी अगर आप mastery कर लिए, it is enough. All right. So let's say the first technology is design. Design का मतलब ये है कि आप जब ऑटोमोबाइल बनाते हो, उसका डिजाइनिंग में गेमिंग भी आता है. जब आप ई-कॉमर्स का वेबसाइट्स डिजाइन करते हो तो वो भी डिजाइनिंग टेक्नोलॉजीज में आती है. And there are various tools of designing. So a lot of students who are interested in painting, arts, craft can become good designers. And design is a technology. And if you type on Google or on any of the portals like naukri.com, you will see that there are more than 33,000 jobs. There is a sound that's coming in. Ravina, agar, yes, thank you. There are 33,000 jobs available in just design technologies. And as and when I'm talking to you, you can Google and you can check these. 30,000 can become 43, they can become 31, but it's around the same. Right? The second technology is web technologies. Now, web technologies, almost 70% of our population are on web technologies. So web technology is one of the biggest and the largest job providers today in the industry. All right. Now, web technologies also has a couple of other things that are surrounded with it. Number one is उसमें डिजाइनिंग भी आती है, like front end आता है, back end आता है.
there are some programming languages भी आती है, जैसे JavaScript. You must have heard HTML, CSS. These are some of the front-end languages. Apart from that, there are content management is also one of the subjects in there. उसमें digital marketing भी आती है. So when you say web technology में सिर्फ HTML, CSS और JavaScript नहीं है. You know, there is a lot of other areas which are, you know, taking care of web technologies. So let's say when you are going to an e-commerce website through your phone without downloading the application, it is nothing but web technology. अगर आपने application download किया हुआ है, then it becomes a mobile technology. You understood? Very, very clear. All right. ये demarcation is very important when you have to get into the field of web technologies or mobile technologies. If you download an application, let's say I have downloaded an application of Swiggy, and if I order my food through Swiggy or Zomato, so that application now becomes a mobile application. So the third technology is mobile technologies. So first one was design, second one was web technologies, third is mobile technologies, right? Again, mobile technologies is well paying. It is also slightly difficult than web technologies, and it has the same element, digital marketing. It has push and pull notifications. It has got cloud computing as well in there. Same with web technologies. Web technologies के अंदर भी cloud computing आता है. Then you have content management, and you have designing also. Okay. The fourth technology is hardware and networking. Now, a lot of you may be interested in, you know, assembling a computer. आपने कभी computer assemble किया रहेगा. Some of them may be very interested with knowing कि computer के अंदर होता क्या है. Hard disk है, power supply है, motherboard है. A lot of these chip level and there are various chips. There's a graphic chip out there. There's a graphic, you know, there's so much of cache memory in there. So these are a part of hardware. Especially students who are from the electronics field actually get into a lot of hardware. You know, it may be with computers, it may be with other elements like, let's say your broadcasting equipments, that also is hardware. You have healthcare equipments, जो आपकी operation, you know, the operations जो medical fraternity में होता है, जैसे operation rooms के अंदर, that is purely hardware, right? So that is also technology which has the same element of a computer. It has got chips, it has got motherboard, it's got a lot of these various hardware, you know, on card level and chip level within that form factor. And that also, now if anyone is interested in hardware and networking, there is an immense, let me share with you this, there's an immense potential of getting into cybersecurity. You cannot get into cybersecurity from any other way. If you are interested in hardware networking, then there is a huge chance of you becoming a cybersecurity expert. Uske liye bhi, for that also you need 8 to 9 years of training. Okay, so none of these technologies are very simple. There's a lot of hard work in there, and there's a lot of dedication and commitment. So your fourth technology was hardware and networking. Now we come to the fifth technology, which is data analytics. Data analytics has been a very recent technology. And the irony of data analytics is that इसमें आपको ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है. और जब आप, when you are working with data, you know, data is a very boring subject. It's not easy to work with data. आप imagine करो कि आपके पास 100 columns है और 10,000 rows है. So on the vertical side, you have got 10,000 items, and on the column side, you have got 100 items. That is your data. और उसमें से आपको छांटना है.
You have to start looking at insights, and that's why there is business intelligence softwares. But before that, you need to understand what is that data all about. And the data can be on anything, right? So data is a very boring subject. It is not easy. Your web technologies is interesting. Your mobile technologies are very interesting. Your hardware and networking is very interesting. Design is even more interesting. But data, oh, it's very, very, it's not beautiful. You know, we can't say, oh, देखो कितना सुंदर है. Data में आपको कोई सुंदरता दिखता नहीं है. There is nothing beautiful about data. Data is purely numbers. And to understand data, which we'll go to the next slide, you need to have a lot of characteristics, attributes, and qualities. Okay. And by the end of the session, I'm sure you will be able to identify कि यार ये मैं नहीं कर सकता हूं. Yeah, you will say, yes, I can do it. Okay. Now, one more thing before I go to the next slide. When we talk about data, now here we are talking about data which is on the mobile and data which is on the web. अगर मोबाइल ना हो और वेब नहीं है, when there is no data on the web or data on the mobile, you cannot do data analytics. I hope that is clear, which means that you can only identify data wherever someone is using a mobile phone or whether someone is using on a web application, which means that in order to become a data soldier, you need to have at least one technology, either web or mobile, in order to become a data soldier. Okay? You cannot become a data soldier without understanding both these technologies. Either one. आप either mobile कर लो या web कर लो. Only then you can become a data scientist. All right? I'm sure you will have a lot of questions, but we will identify, what is. Now we have used this word called value creation. Now, in order to become a data scientist, you need to ensure that you have enough data on you. You should know that we should have data. Students, please mute yourself. Please mute yourself. It is getting disturbance. Rahul, mute yourself. All right, excellent. Yeah. So now value creation. Now, if you want to become a data scientist, you need to have 4 things in place. You need to have business knowledge. You need to know mathematics. You need to understand technology. And you need to, very importantly, know behavioral sciences. Now, someone who's an engineer and who's taken admissions in computer science and some kind of engineering field will say, sir, but I don't know anything about behavioral sciences. Yes, I'm aware, but you'll have to learn in order to become a data scientist. Someone who's a management student will say that I don't have any information on technology. Yes, but you'll have to learn technology. So please understand, to become a data scientist, you have to be better than your engineering students or your classmates and better than your management classmates. Which means that you need to have a combination of a little bit of engineering and a little bit of management. All right. So here it identifies as business. Business ka matlab is knowledge about how a business performs. Business work kaisa karta hai. और ये business का knowledge management students को ज़्यादा पता है. Right? Which means that you have to start now understanding what is business. So let's say a BBA student plus a BCA, उसको अगर हम combine कर ले, तो then you become a data scientist or a data soldier. Okay? So now you'll have to work extra. If you're a management student, you will have to learn technology.
if you're a technology student, you have to learn about business and behavioral sciences. Also, all right, so get this very clear, very, very important. That's why when you apply for a role of a data scientist or a data soldier, it is very clear that these 4 things has to be mandatory into your resume. Okay. I am assuming that so far there is clarity. Okay, I'll go very slow because this is very important. Now, this is very HR function, very human resource function. It's called the people part. If you want to be a data soldier, you need to work in a team. A lot of you will say, नहीं मुझे तो अकेला काम करना है. अगर आपको अकेला काम करना है तो आप कभी data soldier बन ही नहीं सकते. Okay, so people who do not like to work with people should not get into becoming a data analyst or a data scientist. If you like working in a team, then this is the best solution for you of being a data scientist. All right. Now, there are 3 parts to this entire role of a data scientist. The first one is the organization. Now, eventually, you must have heard about BPOs, business processing units, outsourcing जो units होती है, call centers होते हैं. Data scientist का जो role है वो 10 साल के बाद वही हाल होने वाला है जो आज का call center का हाल है. Which means that you will be working on and crunching so much of data that eventually you will begin to realize that you are now a part of a larger project and you are, a part of the team which is now taking decision on the basis of the data that's been created by you. Okay, so the first part is the organization. When an organization selects people, they look at, is the candidate able to achieve a certain task provided? Does the candidate believes in accomplishing targets based on milestones that have been created by the organization? Can a candidate has a sense of direction कि उसको जाना कहाँ पर है? And are they focused? Very, very important. When an organization interviews a candidate, they look at these things. Then they look at, are you a team player? Because even liking analytics is very difficult. So they want to see, are you a champion who can understand or who's very happy with working on data? As I said, data is very boring. So they are identifying talent who can understand data. And final part is where they are very much interested in taking care of the human capital, because to work with data, you need people. All right. So they will look at, are you able to work from home and still provide the desired numbers or the desired achievements for the day or task for the day? The human resource department will also identify how to retain you, because there will be so much of poaching. Poaching means other companies will start looking at you as a very important resource, because right now everyone talks about data, but no one really knows what data is all about. So there is a lot of gray area. And while you are working on data, you also have to learn new softwares, new tools, and also learn new skills on the job. Very, very important. Okay. Let me get on to the next. Now, what you need to understand is that if you're a computer science and engineering student, or if you're an engineering student, okay, there are certain things that you need to understand. And this is what human resource will be looking at. The first part is natural curiosity. Are you curious about knowing, acha, iska kya hoga?
ओहो ये डेटा में लगता है ना मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, इसमें और एक बार देख लेते हैं. सो देयर इज अ लॉट ऑफ रेपिटेटिव एक्टिविटी इन डेटा. आपको एक ही चीज बार बार करना पड़ता है. हेंस दे आर वांटिंग पीपल टू बी इंटरेस्टिंग. अगर कोई बंदा बोरिंग है तो उसको वैसे भी हायर नहीं होएगा. सो दे आर ट्राइंग टू फाइंड समवन हु इज नेचुरल क्यूरियोसिटी इन identifying loopholes in the data. The second part is learning about domain or industry knowledge. I will spend some more time on domain. Now, Madam Shraddha Madam was mentioning about my profile, and it was very. Rahul, please mute yourself. बेटा आपका बार बार है ना अनम्यूट हो जाता है, इसको आप प्लीज ध्यान रखिए. So the definition of domain out here is, let's say my profile is that I am a marketing person. I've done my master's in marketing. All right. So that is my education. But my domain is electronics. So it's very important for you to understand which domain are you from. Okay, so I'll spend some time on this, okay? And I may need you to unmute your microphones and share with me what you think. Okay, so I'll ask some questions. So my first question is Infosys. You all sure what Infosys as an organization is? Now you'll have to tell me what kind of company is Infosys. Is it an IT company? Is it a technology company? It is a IT company. It is an IT company. Anyone else who differs from Mahesh और कुछ बोलना चाहता है कि नहीं नहीं IT कंपनी नहीं है, ये तो है टेक्नोलॉजी कंपनी, ऐसा कोई है? By the way, IT कंपनी गलत है. So now you can also share what you think that Infosys as an organization is. Any answers? What kind of company Infosys is? Technological company. Technological company नहीं, ये भी गलत है. और कोई? Anyone else? Service providing. Service providing. Service providing तो काम होता है, मतलब कौन सा डोमेन में है? डोमेन मतलब उसका फोकस कहां पर है? So before we understand, whether we want to, for example, even you. Information technology consulting company. Information technology consulting company, yes, it is, but that's not its expertise. उसका expertise कहां पर है? उसका जो core जहां से वो पैसा कमाता है वो कहां पर है? चलो, let me give another example. You must have know the company Apple. So come on, tell me what kind of company is Apple? I'll give you 4 choices. Digital services. Digital services? No, that also is not the correct answer. So let's say I'll give you 4 choices with Apple. First choice, it is a marketing company. Second is it is a technology company. Third is it is a video company. Fourth is it is a mobile application company. So what kind of company is Apple? उसका domain क्या है? Technology company. Technology company. Okay, गलत है. So Apple is primarily a data analytics company. उसका जो core है वो data analytics पर है. Okay, but we will answer that. We will explain. I'll explain about Apple maybe at some. We are purely talking about, let's say, Infosys. So what kind of company is Infosys? So before we get into data analytics or any subject, it's important for you to know industries. Okay, when I said domain/industry knowledge, you'll have to first identify industry. So I'll again pose you some more questions. There are 2 kinds of industries. एक होता है core का मतलब जो main industry होता है, जिस पर इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी और दुनिया की इकोनॉमी चल रही है. ओके. सेकंड होता है सराउंड.
सराउंड का मतलब उस इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए बाकी कौन से इंडस्ट्रीज डेवलप हुए हैं, राइट? सो I'll give you an example of a core industry. Automobile is a core industry. Healthcare is a core industry. Then you have hospitality as one industry, जहां पर hotel, tourism, these kind of. So I've identified 3 industries for you. Then there is manufacturing as another industry. It can be manufacturing of anything, but that's an industry by itself, right? Any other industries that we have missed out? Pharmaceutical, जो दवाई बनाती है वो एक इंडस्ट्री होती है. और कौन से इंडस्ट्री है? Can you start mentioning a few? Mining industry. कौन सा? Mining. Very good. Very, very nice. Mining is another industry. So these are core industries which, now mining can be coal mining, can be iron mining, can be bauxite, can be magnesium, can be so many minings. Diamond can also be one of the mining part of it. Rahul, you need to, mute your microphone. Okay, you are disturbing on a regular basis. A request to you is that if you can keep your focus on the phone and please keep it on mute. Okay. So I've shared with you the industries which are core. Now, in order to support the core industry, you need surround industries. So let's say every industry will have an accountant or an accounts department. Agriculture. So agriculture is also an industry. Very nice, very beautiful, very good. So you're a very intelligent, smart students. So now that you've understood what the core industry is, it is easy to identify what a surround industry is. Surround industry में आता है आपका accounts, जो हम बोलते हैं what do you call accountant जो होता है वो कौन से industry को belong करता है? So finance and So we have got something called a banking and finance services industry. So it is called BFSI. So banking and financial services industry, BFSI. Okay, so that also is industry, very nice. Now, is IT a core industry or a surround industry? core industry है कि IT industry है? core industry. Core industry, sir. So industry. when I heard it for the first time that it was core industry, I was shocked. I mean, it is not a core industry, it is a surround industry. Which means that हर एक core industry में आपको एक IT department होता है. हर एक core industry में आपका एक छोटे-छोटे departments होते हैं. So technically that doesn't become an industry, that becomes a surround industry supporting the core industry. Right? So I'll give you another example. Let's say we came to Infosys. If I tell you that Infosys is not an IT company, Infosys is a banking company, will you believe me or will you say no sir, aap to galat bol rahe? What do you think? Right, sir. I'm right. Why should I be right? सर मुझे उतना पता नहीं था, बस मैंने गेस किया था. अच्छा, गेस किया था. नहीं, यहाँ पर गेस वर्क नहीं चलेगा. You cannot guess. You will never clear interviews if you guess. वो आपको वहां पर पकड़ लेके बोला अगली बार आ जाना बेटा इंटरव्यू के लिए. So there is, so I'll tell you what Infosys does. Infosys provides banking softwares to banking industries like ICICI Bank, State Bank of India. Yes. Right? So it provides banking softwares and it provides services.
अगर आप बैंकिंग के सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हो तो आपको बैंकिंग का नॉलेज ज्यादा है. So tell you what Infosys does. Infosys provides bank. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. No, I'm not speaking. Sir So is because there not was someone else speaking. who was speaking. Rahul, please mute yourself. Bhai. Rahul, lot of noise you are making again. If this same continues, I'll remove you from the class because you're disturbing the entire class. So if you want to, you can chat and you can send messages. I will try to respond to them. So yes, Infosys provides banking solutions and banking softwares. They have got a software called Pinnacle. And that Pinnacle software is used in almost all the banks in India today and internationally, which means that the core industry that Infosys belongs to is BFSI. Right? Now, very important, if you are belonging to a core industry, but you're providing IT services, you technically become a part of the core industry. Right? So when I'm saying domain provides. So when I mentioned to you about core and surround, your aim should be to always get into a core industry. And that's where your salaries become better because you're in the core industry. Even education is a core industry, okay? So you have to identify your core industries and you have to identify surround. If you are able to get a job in a core industry, your salary becomes better. If you're in the surround, then your salaries are lower. But if you have to begin your career, you have to begin your career with the surround industry and then get into the core industry. That's how it is going to be. Okay. So having industry knowledge. Now, if you are a banking person, you can only work in a BFSI industry. So similarly, if you're an IT individual, if you're doing computer science engineering or any other field, you have to identify your domain from the beginning. It's very important. If you do not identify your domain, you will always be struggling. Okay. However, when we have our sessions with you from next week onwards, we will ensure, we will explain you more on the domain or the industry knowledge. Then in order to become a data analyst, you also need to have hacking skills because you need to gather information from various sources. So you need to be, very smart or very good with computers. The fourth is where you need to have statistics knowledge. Now, most of you say, oh, no, sir, statistics is very boring. मुझे histogram और इसके beyond तो कुछ आता ही नहीं है. So, which is true, but in order to be a data scientist, you need to have statistical knowledge. Okay. And then you have other things like probing and investigating data and data patterns to identify, various trends in the industry. Okay. Just one question. What is the meaning between probing and investigating? ये दोनों में क्या difference है? Probing and investigate. So probing is purely जब हम सवाल करते हैं, आपका नाम क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है? Sorry. Mohit Yadav is raising his hand for the answer. Yes, please answer. Anyway, I'll continue, okay? Yeah. Yes, Mohit, if you can ask me the question. Mohit, you can write down in the chat. I think, yes, you can write down in the chat. So, probing means when you're asking questions. आपका नाम क्या है, आप करते क्या हो? और investigation तब होता है when you are, आपको कुछ suspicion होता है कि आप ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है. So then I investigate from other sources. Okay. So this is a role of a data scientist.
Apart from probing, you also need to investigate. We come to the next part, which is you have to create models of data visualization. Now, data analyst ka ek bada challenge, one of the biggest challenges of data analyst is that you need to present your data to your clients, which means that you need to have presentation skills. You also need to come up with various scenarios. Ki, sir, what if I do this? Iska kya hoga? If I expand the horizon from this area to that area, can I find outliers which can also become the next part of our business? These are the kind of queries that should come from you. Optimization is one of the biggest challenges of ISPAR. There is so many softwares on optimization, but sad is not many people are able to explore this area. So there is optimization techniques, which means that you need to have mathematical knowledge so that you can use computation. Okay. I'm sure most of you know the difference between what a calculator is and what a computer is. We use computer for typing letters. It is not a correct way of doing it. But the reason of computation is where you can use logic along with computing on various mathematical formulas. Okay. The second last is database development and data miners. There's a difference out here. Whatever data comes to you is filtered data, or we call it as structured data. But there are data miners who are filtering that data and giving it to you. So data mining is one of the biggest and very dirtiest jobs. It's like kuda saaf karna, right? Or from the pile of garbage, they have to, pick and choose data which they can then give to the data soldier or the data scientist. So database developers and data miners are primarily meant for computer science and engineering students. And finally, which is the most difficult, is having some kind of creativity, which lacks. Most of the computer science engineers, they don't have creativity in them. So they have to, inculcate that element. And finally is communication, where you might be very good in, programming, but if you're unable to communicate, you might not end up becoming a project manager or a project leader in your organization. All right. So I give an example of, I'm sure everyone watches cricket. So do you know what is the qualification to become a captain in the cricket team? Some of them would say good technical. Sorry. Good technical skills, good fielding skills, good batting skills, should be a leader, should be, so many other factors that you get. But to become a captain of any cricket team, whether it's Australia, whether it's England, whether it's India or any other country, the only one requisite is that they should be able to communicate. Now, when I say communicate, means not speak in local language, not speak in Haryanvi, not speak in Hindi, but they should be able to, when a team wins or loses, the commentator comes and says, so Mr. Dhoni, it was lovely. We had a great time and you did a very good job. Tell me something, what was the game changer for you? At that time, the captain, Mr. Dhoni, should be able to speak in English. And in front of the entire million people who are watching him, he should be able to speak in English and then also effectively communicate to the world that how their team played, how did they contribute, and what was the mistakes that they made and they lost. This part is very crucial. And if you look at all the captains, they are confidently speaking in English and hence they become captains. Otherwise, they are better players than Dhoni, better players than Virat Kohli, but they don't become captains, right? So if you want to become project leaders, if you want to become
an entrepreneur, if you want to become, a good manager, you have to have communication skills. You should be able to present it to your clients. You should be able to present it to your counterparts who are in the other parts of the country, other parts of the continent. You have to be able to speak to an Israeli. You have to be able to communicate to a European or a British or even to an American. That's the part of communication that I'm talking about. All right. Now, most of you also are from the management field. So I've put some slides which is very similar in the commerce and management, but there are one or two things which are important. I've added something called substantive expertise, which means that you have to be an expert in your field. If you are expert, let's say in human resource has at least about 20 elements within them. So one would be payroll management, training, induction, recruitment, holistic development, succession planning. There is a lot of elements within human resource. So you should have substantial expertise in a particular area of human resource management. If I say the same thing for engineering, you have to identify which technology do you want to belong to. In that technology, how many tools do you know? And within that tools, how expert or what is your grading to the knowledge of those tools? So a lot of people say, I want to become a cybersecurity expert. But do you know, for a cybersecurity expert, you need to have knowledge about hacking. You need to have knowledge about operating system. You need to know at least about 2 software languages. You need to understand hardware and networking very well. You need to understand how to connect or how 2 languages must communicate to each other. Only then you will be able to hack, right? So if you do not know the knowledge of the entire computer domain, how will you be able to hack? So a cybersecurity can only be possible when you are able to have information on the web, cloud computing, information on mobiles. So it's a lot of work. तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट इतना आसान से कोई बनता नहीं है. उसको एटलीस्ट 9-10 साल कंटिन्यूस rigorous training has to be conducted to that. All right, I go to the next slide, which is very similar. There's only one difference out here called open to possibilities. Now, why we have given this option to commerce and management, open to possibilities? Ye engineer, an engineer cannot perform. Open to possibilities ideally mean that you should be able to keep trying so that there is a possible outcome which is favorable to your business. I'll give you an example. Everyone has great ideas to start up a business. We all talk about startups. Ideas, everyone has ideas. But is that idea feasible? Can it be concluded within 3 months or 4 months or 1 year? Do you have knowledge about how to raise funds or how to calculate funds? Do you know how to calculate ratios on profitability, on cash flows? So when we talk about startups, we all are very excited. मेरे पास एक idea है. I have an idea. I would like to start. Yes, but is the idea feasible? Does the market want your idea? Do you have enough data to back it up that your idea is better than the others? Is your idea going to be disruptive or sustaining? These are the kind of open to possibilities should happen. And that is only possible when you have read almost 100 books. So management students who are spending 2 years, in your respective institutions, you will have to read at least 100 books minimum, not academic books, books from your library, books from outside, to gain that much knowledge. So with the engineering students, you all have to read at least 70-80 books
not from the academic perspective. Learn C, C++ for dummies, not required. That you do it when you are learning engineering. Apart from that, you need to learn books. You need to read books which are outside. Only then you'll be able to gain knowledge. I'm sorry to interrupt, sir. Sir, we are falling short of time. I've got 5 minutes more. Yes, sir. You need Excellent. like 11. Speaker is about to join us, so 11:30 we'll start the next session. Excellent, ma'am. So I'm on time, and this is my last slide. And I'm Okay. done, which I've left 5 minutes for it. Okay. So, so I hope you all have understood what a role of a data scientist is. I have tried to keep it as simple as I can. This is my favorite. Avinash Kaushik is ex-Google. And you will also see that you can Google this gentleman, Avinash Kaushik. And he has quoted something very beautiful, which I've mentioned here. He says, to all my engineers and my management graduates, we are getting into the business of thinking about strategy and thinking about places where logic doesn't work and computers are no good. इसका मतलब ये है कि अगला जो 15 साल, the next 10 years and 15 years, you will have to become masters of thinking and masters of creating strategies, because you will have so much of softwares available that you don't have to now be proficient in software engineering. If you're doing computer science and engineering, time is limited for 10-15 years. Beyond that, there will be something else that will be coming across. All right. So take this very seriously. We are getting into the business of thinking about strategy and thinking about places where logic doesn't work and computers are no good. All right. You can take this with yourself back home and think about it. And then you will probably be able to identify what or how to become a good data scientist or a good data soldier. All right. Thank you so much for your time. Thank you for your attention. Sir, thank you so much. Welcome, ma'am. Sir, thank you so much for your valuable time and the informative session that you have given to our students. So thank you so much for explaining to students about the different kinds of technologies, 5 different kinds of technologies, so that they can decide in which direction they have to move. And so thank you also for explaining in details about the skills required to become a data scientist and what the HR is looking for in a data scientist. So students, as I know that most of you want to become a data scientist, so it's the right time for you all to enhance those skills so that you can have a bright career ahead. These 4 years you can use to enhance your skills, what the HR is looking for in the data scientist. All those kinds of skills you can enhance, and surely you can move towards your career as a data scientist. So thank you so much, sir, once again for giving your valuable time to our students. And thank you, and we'll meet on 11th for the training program that we are having. All right. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Bye-bye. So you can leave now. Ma'am, when will start next class? Yes, sir. Dear students, the next speaker have joined us. A very good morning, sir. Sir, can you hear me? Sir, students, our next speaker, KC Gupta, sir, have joined us. Sir, I, on behalf of WCTM, welcome you to the online orientation program. Students, before sir shares his valuable experiences with you all, let me give a brief introduction about sir. Sir is former director, Defense Estate, Western Command. He graduated in law and mechanical engineering.
He got selected in Civil Services Examination of 1988 and joined the Indian Defense Estate Service, one of the IAS allied services, in 1989. He then worked in various capacities, holding different positions in the areas of administration of cantonments and acquisition and management of lands for the defense forces across the country for 33 years, till his retirement in the year 2021 from the post of Director Defense Estate, Western Command, Chandigarh. At present, he is engaged in writing articles in newspapers, social media, and appearing on YouTube channel discussing various national issues. He's also working on a book of Science of Action. It's a great honor for our students, sir, to hear from you. Over to you, sir. Thank you very much. Our pleasure, sir. Good morning to all of you, ladies and gentlemen. My dear students, the faculty of the World College of Technology and Management, and other distinguished guests. This is my pleasure to, come and address you, to interact with you. Now, I like to start my topic with a couplet from a Hindi poem. युवक तो देश की दौलत तो साहस का खजाना है. युवक, this is more appropriate for the youth, the young students. युवक तो देश की दौलत तो साहस का खजाना है. समुन्नत भाल भारत का तुझे करके दिखाना है. सीने में तेरे दिल है, भुजाओं में तेरे बल है. बढ़ चले तू अगर तो पास मंजिल है. स्वर्ग को तुझे ऊपर उतार लाना है. समुन्नत भाल भारत का तुझे करके दिखाना है. युवक तो देश की दौलत तो साहस का खजाना है. समुन्नत भाल भारत का तुझे करके दिखाना है. दोस्तों, आप खुशकिस्मत हैं कि आपने इतने प्रेस्टिजियस कॉलेज में एडमिशन लिया है और आप अपने करियर की नींव रखने जा रहे हैं उस शिक्षा पर जो आपको इस कॉलेज में मिलने वाली है. भिन्न भिन्न ब्रांचेज में आप अपनी इंजीनियरिंग करेंगे. जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं वो अपना MBA करेंगे. सो यू आर रियली लक्की पीपल. अगर आप देखेंगे कि वो लोग जो यहाँ पर एडमिशन नहीं कर पाए, कामयाब नहीं हो सके, उनकी तुलना में आप खुशकिस्मत हैं. केवल किस्मत ही नहीं, ये आपके बेटर परफॉर्मेंस का प्रमाण भी है. दोस्तों, आज की टॉपिक का विषय जो आज की चर्चा का जो विषय मुझे दिया गया है, दैट इज हाउ टू लिव ए पावरफुल लाइफ एंड रीच योर ड्रीम गोल्स. इसमें दो शब्दों पे खास तौर पे मेरा ध्यान जाता है. एक तो आपने बात की है ड्रीम गोल्स, और फिर एक है पावरफुल लिविंग. या ऑफ कोर्स, इफ यू डोंट हैव पावर, you cannot do anything worthwhile, let alone realization of your dreams. दोस्तों, ये ड्रीम्स क्या हैं? ये सपने क्या होते हैं? सपने जो आप जागी आंखों से देखते हैं, जिन्हें हम दिवा स्वप्न कहते हैं हिंदी में. इच्छाएं हैं मन में, वो सपने हैं. ऐसे आप देखिए तो हर इंसान के सपने क्या होते हैं. आप विद्यार्थी हैं, अपने करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं. क्या सपने हैं आपके? कि बहुत सारा पैसा हो, बहुत बड़ी गाड़ी हो, बहुत ऊंची पोजीशन हो, सरकार में मैं कलेक्टर बन जाऊं, डिप्टी कमिश्नर हो जाऊं किसी जिले का, किसी बड़ी कंपनी का मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूं, या फिर CEO. आपकी इच्छाएं कुल मिलाकर के कुछ ही ऐसे विषय हैं जिनके इर्द गिर्द ही केंद्रित होती हैं. आपको पैसा चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए. आपकी जो चहेती या चहेता जो स्त्री और पुरुष है, उनसे आपकी मुलाकात हो, उनसे आपकी दोस्ती हो, और समय आने पर उनसे शादी हो जाए. यही तो इच्छाएं हैं. लेकिन मित्रों, सोचने की बात यह है कि ये इच्छाएं तो सभी की होती हैं. कौन ऐसा है जो इच्छाएं ये नहीं करता? लेकिन सबकी तो पूरी नहीं होती.
कुछ की होती हैं, कुछ की आधी अधूरी होती हैं और किसी किसी की तो बिल्कुल भी नहीं होती। तो कारण क्या है? डॉक्टर कलाम साहब का एक वाक्य मुझे याद आता है कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने ना दें। अब इस बात में बड़ा फर्क है। वहां पर उनका इशारा साफ ये है कि केवल इच्छाएं मात्र करने से, केवल डे ड्रीमिंग करने से कुछ नहीं होगा। उन्हें तो सपने सपने कहना ही बेकार है, व्यर्थ है। हम्म, जिन गोल्स को आप चेज करते हैं, जिन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आप संघर्ष करते हैं, वही सपने हैं। तो केवल सपने नहीं, केवल डे ड्रीमिंग नहीं, आपके पास एक विजन होना चाहिए। आप जानते हैं कि जो सपने आप देखते हैं, सभी देखते हैं, तो उनमें से कुछ लोगों के ही पूरे क्यों होते हैं? कुछ लोगों के सपने ही हकीकत में क्यों बदलते हैं? सपनों को हम इच्छाएं भी कह सकते हैं, और इच्छा अपने आप में कोई मायने नहीं रखती। इच्छा को पहले संकल्प में बदलना होगा। यू हैव टू कन्वर्ट योर डिजायर्स इनटू डिटर्मिनेशन। मुझे याद आता है, मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के सिलसिले में एक सज्जन से मिला था जो ऑलरेडी आईएएस कर चुके थे, मुझसे सीनियर थे। मैंने कहा, भाई साहब, मुझे आई एम इंटरेस्टेड इन सिविल सर्विसेज। ही सेड, गेट लॉस्ट, योर इंटरेस्ट विल टेक यू नो वेयर, यू हैव टू बी डिटरमाइंड। सो डिटर्मिनेशन, द फर्स्ट थिंग इज संकल्प, डिटर्मिनेशन। और खाली संकल्प से भी नहीं होगा। पंडित जी आपसे संकल्प भरवा लेते हैं कुछ भी करने का जब आप जाते हैं किसी भी धार्मिक आयोजन में। संकल्प के साथ आपको संकल्प की शक्ति भी चाहिए। सो इट्स नॉट ओनली डिजायर्स, it's not only wish. Wishful thinking will take you nowhere. You must will. You must have the will. And that will has to be combined with the power. So then it becomes willpower. And willpower is something that will take you to your destination, to your dream goals, to realize all your dreams. अब सवाल आएगा कि साहब ये शक्ति हमारे पास कहाँ से आए? बहुत से लोग हैं जो समझते हैं कि हमारे पास तो भाई शक्ति है ही नहीं, हम क्या करें, कहाँ से लाएं इतनी ताकत? आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बहुत संपन्न परिवार से नहीं होंगे। कुछ के माता पिता आपकी पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए बड़ा संघर्ष उन्होंने किया होगा, आज भी कर रहे होंगे। कईयों ने लोन भी लिए होंगे। तो ऐसे लोगों के मन में ये बात स्वाभाविक आ सकती है कि साहब हम कहाँ से ताकत लाएं, हम तो कमज़ोर लोग हैं। वी आर फ्रॉम द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, आइदर इकोनॉमिकली वीकर। और जो संपन्न भी हैं, दोज हु कम फ्रॉम वेल टू डू फैमिलीज, प्रिविलेज्ड फैमिलीज, उनको चूंकि जिंदगी में सब कुछ आसानी से मिल गया है, तो उनकी भी विल पावर नहीं होगी। व्हेन यू गेट एवरीथिंग फार इजीली, यू डोंट डेवलप ए गुड विल पावर। तो कहाँ से आएगी ये पावर? इस सवाल के जवाब में दोस्तों मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप देखिए जो शरीर आपको दिया है परमात्मा ने, द ह्यूमन बॉडी, केवल उस पर एक नज़र डाल लीजिए। वैसे तो बहुत सारे आयाम हैं, शक्ति के बहुत सारे केंद्र हैं, बहुत सारे जगहों से आप उसे ले सकते हैं, लेकिन समझने के लिए कि शक्ति आप कहाँ से हासिल कर सकते हैं, जस्ट हैव ए लुक एट योर ओन बॉडी। क्योंकि हम शरीर को ही ज़्यादा जानते हैं। मैं अगर अभी इसी स्टेज पे आत्मा की बात करूँगा तो शायद आपको बात पूरी समझ में नहीं आएगी। जस्ट हैव ए लुक एट ह्यूमन बॉडी। जो शरीर आपका है ना, जो आपका है, मेरा है और बाकी तमाम लोगों का है, और आपके उन दोस्तों का भी है जो आपसे ज़िंदगी में आपसे बेटर परफॉर्म कर गए। आप में से कुछ लोगों को ये मलाल होगा कि साहब हम आईआईटी में नहीं जा पाए,
IIM में नहीं जा पाए, तो उन लोगों के पास क्या था? अगर आपका वजन तकरीबन 70 किलो है, तो मालूम है कितने एटम हैं आपके शरीर में? 7 × 10⁻27. Average, I mean, if you have the average of 70 kg, so you have 7 × 10⁻27 atoms. That is 7 followed by 27 zeros. Just imagine, try to have a, imagine how big the number is. That is 7 billion billion billion. And you know the power of one single atom? We have heard of it in the form of atom bomb dropped in Hiroshima and Nagasaki, the kind of destruction it did. Yeah, of course, it was a negative utilization of the power of atom, but just spare a thought for it. And then you are harnessing the power of atom in the form of nuclear energy. कितनी बिजली हम उसे पैदा करते हैं। और एटम से अगर आपको पूरी बात नहीं लगती कि एटम की पावर को निकालना तो बड़ा टेढ़ा काम है, तो हम आपको बता दें कि आपके शरीर में ऑन एन एवरेज 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। आप अपने मस्तिष्क की बात करें, जो ब्रेन आपके पास है, यू हैव गॉट समथिंग लाइक 100 बिलियन नर्व सेल्स। और मालूम है, अगर आप उन सबको जोड़ दें, एक का सिरा दूसरे से मिला के, दूसरे का तीसरे से मिला के, अगर आप उनको एक साथ जोड़ दें तो कितना हो जाएगा वो? दैट विल बिकम 8.5 लाख किलोमीटर। जस्ट थिंक ऑफ इट, 8.5 लाख किलोमीटर बिजली का विशाल ये बिजली घर आपके पास है। इतना लंबा चौड़ा पावर हाउस आपके पास है कि जिसके जो तार हैं उनकी लंबाई 8.5 लाख किलोमीटर है। और ब्लड वेसल्स पूरे शरीर में है। कहीं आपको एक पिन को चुभो दे तो खून निकल आता है, क्योंकि वहाँ ब्लड वेसल है, उसमें से खून दौड़ता है। आपके शरीर में जितने ब्लड वेसल्स हैं उनकी लंबाई एक के साथ एक दूसरा जोड़ दें, so that will come out to be something like 100,000 miles, यानी 1,60,000 किलोमीटर। आप छोटे मोटे कोई हस्ती नहीं हैं दोस्तों, आप असाधारण हैं। यू आर नॉट इनसिग्निफिकेंट। केवल शरीर के ही स्तर पर आपके पास इतना अद्भुत ये यंत्र है जो परमात्मा ने दिया है, फॉर विच यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड। और इसके अंदर इतनी ट्रिमेंडस एनर्जी है। भारत के सनातन धर्म में बहुत बहुत बड़े ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने बहुत से अद्भुत कार्य किए हैं, और ये भी आज तो उस पर विश्वास करना मुश्किल है कि प्रकृति की बहुत सारी शक्तियों पर वो नियंत्रण प्राप्त कर लेते थे। तो कहाँ से लाते थे? बाहर से नहीं थी। वो सारी शक्ति, वो सारी पावर उनके अंदर ही थी। यस सर, बट अभी लोग अपनी ये शक्तियाँ इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं अभी के टाइम पे। यू आर राइट, नहीं कर पाते हैं ना, तो उसके कारण हैं, एंड वी आर कमिंग टू दैट। आपको ये जानकर थोड़ा अजीब लगेगा कि इतिहास में भी जितने महापुरुष हुए हैं, चाहे वो आइंस्टीन थे, न्यूटन्स थे, आर्यभट्ट थे, वराह मिहिर थे, हमारे देश के भी और विदेशों के भी जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, आज के युग में भी जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बिजनेस टाइकून हैं, बिल गेट्स हैं, हमारे अडानी और अंबानी हैं, स्टीव जॉब्स हैं, जहाँ तक बॉडी का सवाल है तो उनकी और हमारी में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। लिटिल गिव एंड टेक वो वही है। उनके पास भी 8.5 लाख किलोमीटर के नर्व सेल्स हैं, वो आपके पास भी हैं, मेरे पास भी, हम सबके पास है। तो आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि भाई अंतर कहाँ है फिर? क्यों होता है कि वो लोग इतने सफल हो गए और हम लोग जो है उनके मुकाबले कहीं भी नहीं है? अंतर कहाँ है? अभी जैसे हमने बताया कि जो आपके शरीर में जितनी चीज़ें हैं उनमें ऊर्जा है, वो दैट इज ट्रिमेंडस एनर्जी।
लेकिन एनर्जी अपने आप में काफ़ी नहीं है। सूरज है ना, हमारा सूर्य नारायण, सूर्य भगवान, उसकी एनर्जी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एवरी मोमेंट hundreds of thousands of हाइड्रोजन बॉम्ब कीप ऑन एक्सप्लोडिंग। इतनी भयंकर ऊर्जा उसमें है। जो गर्मी हमें यहाँ पृथ्वी पर मिलती है वो वहीं से मिलती है। जितने भी ईंधन हैं वो सब उसी की देन है। लकड़ी, पत्थर, कोयला, सॉरी पत्थर में तो नहीं है, लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो हजारों वर्षों की प्रोसेसिंग के बाद जो बने हैं, बट द बेसिक एनर्जी हैज़ कम फ्रॉम द सन। पेट्रोल है आपके पास, बड़ा इन्फ्लेमेबल है, लेकिन क्या ये अपने आप आपकी गाड़ी को चला देगा? कैन इट डू इट एनीथिंग लाइक दैट ऑफ इट्स ओन? नो। उसमें बड़ी एनर्जी है, बड़ी हीट है। सो अगेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हैविंग एनर्जी एंड हैविंग पावर। Unless the energy is tapped and it is brought into the dynamic form, it can do nothing. आपके पास कोयले के बड़े भंडार हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा जंगल हैं, सूखी लकड़ियां हैं, आपके पास पेट्रोल है, डीजल है, गैस है। जब तक उसको आप एक्टिवेट नहीं करेंगे वो डेड गोल। वो एक्टिवेशन कैसे होगा? अब सवाल आता है कि वो एक्टिवेशन कैसे होगा। हम आपको एक और उदाहरण से समझाते हैं। यू नो, रिवर, पानी, पानी का कितना बड़ा भी स्रोत हो, बहुत बड़ी झील क्यों ना हो, क्या आप उससे बिजली बना पाएंगे? लेकिन नदी जो ऊपर से आती है नीचे और बहुत वेग उसमें होता है, इट हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग करंट, वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लो, और फिर हमारे इंजीनियर्स क्या करते हैं, उस नदी को रोक के एक बांध बना देते हैं, एक डैम बना देते हैं, उसमें वो सारी एनर्जी इकट्ठी हो जाती है और फिर उसे बड़े कंट्रोल्ड ढंग से उसके जेट बना करके ले जाते हैं, जो टरबाइन के ऊपर डाली जाती है। टरबाइन घूमती है, फिर वहाँ से आपका जनरेटर घूमता है और फिर उससे बिजली बनती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का यही सिद्धांत है बेसिकली। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है? कुछ लोग बोलते हैं साहब पानी से बिजली निकाल लेते हैं। नहीं, गलत है। पानी से बिजली नहीं निकाली जाती। इट इज द फ्लो ऑफ वाटर विच कंटेन्स द एनर्जी, इट इज द डायनामिक, इट इज द काइनेटिक एनर्जी कंटेंट इन द फ्लो ऑफ वाटर दैट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे विंड पावर है। इसी तरह से हवा जब चलती है तो उसके भीतर जो शक्ति है, जो पावर है, उसे आप टैप करके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। The point is, having energy, having a source of energy by itself is not enough unless you add action to it, unless you convert it into power. So energy plus action is equal to power. तो पावर के लिए जो एनर्जी, जो ऊर्जा आपके भीतर है, उसे आपने एक्टिवेट करना है। सर इलेक्ट्रिसिटी तो हम लोग के अंदर भी मौजूद है। या दैट इज राइट, यस यू आर राइट, बिल्कुल मौजूद है, लेकिन आप उससे टरबाइन चला सकते हैं क्या? जो इलेक्ट्रिसिटी आपके भीतर है, आप सीधे सीधे क्या उससे बिजली का बल्ब जला सकते हैं? हालांकि एक एवरेज आदमी, बूढ़ा आदमी जो रेस्ट में है, उसके पास भी अंदर इतनी एनर्जी है कि उससे एक 100 वाट का बल्ब तो जल सकता है। और जो दौड़ रहा है, एक एथलीट है, वो तो 2000 वाट तक इलेक्ट्रिसिटी उसके भीतर होती है। सी दैट इज द की पॉइंट। सारी किस्म की एनर्जी आपके पास हैं, और चूंकि शरीर के अपने भी तो इतना बड़ा जो तंत्र है उसको काम करना है, तो पार्ट ऑफ इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर। अब यूं तो आपका शरीर जो चलता फिरता है वो मैकेनिकल एनर्जी भी है, केमिकल एनर्जी इसके भीतर है। जो आप खाना खाते हैं, उसको जो डाइजेस्ट करते हैं, वो केमिकल एनर्जी उसके लिए आपका जो खाने को कन्वर्ट करता है। तो सभी तरह के हैं आपके पास। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही नहीं, वो तो है ही है, आपके पास मैकेनिकल भी है, केमिकल भी है, और कई किस्म की चीज़ें हैं। आखिर ह्यूमन बॉडीज है माइक्रोकॉस्म ऑफ द यूनिवर्स। जो आपका शरीर है वो पूरे ब्रह्मांड का ही एक लघु रूप है।
मिनी माइक्रोकोस्म। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि एनर्जी जो है उसको पावर में हम कन्वर्ट करें तो उसके लिए तैयारी होनी चाहिए। आप कहेंगे साहब कर्म तो हम करते ही थे, जो एनर्जी भी हमारे भीतर थी, कर्म भी हम कर रहे हैं, काम भी हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी सफलता इतनी नहीं हुई। हम तो आईआईटी में नहीं जा पाए, मेरा दोस्त था वो तो चला गया। बिल गेट्स देखिए कितने अमीर हो गए हैं, हम तो, जो बिजनेस करने वाला बोलेगा साहब मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उसके मुकाबले। बात तो सही है। तो इसका क्या कारण है? इसके कारण की अगर हम थोड़ी जांच करें तो हम पाएंगे, देखिए अगेन आई गो बैक टू द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। अगर तो पानी ज़्यादा ऊंचाई से आ रहा होगा तो उसमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, ज़्यादा फोर्स है, उससे ज़्यादा पावर बना पाएंगे। वही पानी अगर थोड़ी कम ऊंचाई से होगा तो आपको उतनी पावर नहीं मिलेगी। तो सवाल ये है कि आप अपने भीतर की एनर्जी को जो टैप कर रहे हैं वो किस लेवल से कर रहे हैं। नॉट एवरीबॉडी हैज गॉट द सेम लेवल ऑफ एवोल्यूशन ऑफ पर्सनालिटी। हमारा अपना कुल स्तर कितना है, शरीर के अलावा हमारी मन का, हमारी बुद्धि का, हमारी आत्मा का, हमारा जो पर्सनालिटी है वो कितना डेवलप है, उसके आधार पे तय होगा कि वो जो भीतर की एनर्जी है उसको हम किस लेवल से जाके टैप करते हैं। यू नो, वी वी ह्यूमंस एग्जिस्ट इन 4 डायमेंशंस। बहुत बेसिक बात आपको बता रहा हूं, आई एल नॉट गोइंग टू लॉन्ग डिटेल्स। इन शॉर्ट, वी हैव ए 4 डायमेंशनल एग्जिस्टेंस। आपका शरीर है, आपकी बुद्धि है, आपके पास हृदय है और आपके पास आत्मा है। Basically, these are the 4 dimensions in which you exist. You have got a physical body, you have got mind, that is intellect, you have got the heart, and then you have got the soul. तो आपका अब फर्ज क्या है इसे डेवलप करना, और खासकर स्टूडेंट लाइफ में। एज ए स्टूडेंट, योर फर्स्ट एंड द लास्ट ड्यूटी इज टू डेवलप योर सेल्फ, acquire all round डेवलपमेंट। सर्वांगीण विकास प्राप्त करना एक विद्यार्थी के तौर पे ये आपका प्रथम कर्तव्य भी है और यही आपका अंतिम कर्तव्य भी है। विद्यार्थी के तौर पे, छात्र के तौर पे आपको और कुछ नहीं करना है, केवल अपना सर्वांगीण विकास करना है। और उसके रास्ते बड़े साफ हैं, आप सबको मालूम है। आप उस पर कितना चल पाते हैं उसी के अनुसार आपके व्यक्तित्व का विकास होता है। शरीर को बनाने के लिए आपको एक्सरसाइज, व्यायाम जरूरी है, आपको खेलों में भाग लेना जरूरी है, आपको सही किस्म की डाइट लेना जरूरी है, पूरी नींद लेना जरूरी है। अब आप उसमें से कितना करते हैं, कितना कंप्रोमाइज करते हैं, क्या हेल्दी डाइट है, दैट यू नो वेरी वेल। आई डोंट हैव टू गो इनटू डिटेल ऑफ एनी सच थिंग। बात जब इंटेलेक्ट की आती है, आपकी बुद्धि, तो बुद्धि के विकास के लिए एक तो अध्ययन, पढ़ाई। अब आप स्टूडेंट है तो पढ़ाई तो आपको करनी ही है। दिस इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ योर कमिंग एंड ज्वाइनिंग दिस कॉलेज और एनी कॉलेज फॉर दैट मैटर। तो जो आपके सिलेबस में आपको पढ़ाया जाएगा वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन मेरी छोटी सी एडवाइस ये है कि उसके अलावा भी कुछ आप ऐसा पढ़ें जो आपके माइंड को एजिटेट करे, विच एक्सरसाइजेज योर माइंड। कुछ ऐसा करें जो आपके माइंड को शार्प करे। आप मैनेजमेंट पढ़ रहे होंगे तो आप मैथमेटिक्स के पजल्स भी कर सकते हैं सॉल्व, वर्ड पजल भी आते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। आप कोई और एक्टिविटी ले सकते हैं, ऐसी एक्टिविटी, और खासकर पढ़ाई, आई एम टॉकिंग ऑफ स्टडीज। आप एक ऐसा कोई कोर्स भी ले सकते हैं जो जिसमें आपको अपनी बुद्धि को लगाने की जरूरत पड़े, वो चीजें जो आपने पहले ना की हों, समथिंग डिफरेंट, समथिंग व्हाट यू हैव नॉट बीन डूइंग सो फार, दैट एजिटेट्स योर माइंड, दैट ट्रिक्स योर माइंड, दैट चैलेंजेस यू टू अप्लाई योर माइंड। उसको साथ में रखिएगा, बड़ा काम आएगा ये आगे आपको। बात जब हम हृदय की करते हैं, विच इज द 3rd डायमेंशन ऑफ एग्जिस्टेंस, एस्थेटिक्स। दिल का क्या मतलब है? कविताएं, साहित्य, नृत्य, संगीत, पेंटिंग, पोएट्री, ये जितनी भी कलात्मक गतिविधियां हैं, इनमें से कोई एक पकड़ लीजिए जो आपको पसंद हो।
ये आपके हृदय का विकास करेगा, एंड you become more perceptive, you become more receptive to the new ideas. इनोवेशन के लिए इमेजिनेशन की जरूरत होती है, और ये कल्पनाशीलता आपको आती है जब आपके पास कोई ना कोई एक आर्टिस्टिक एक्टिविटी है. You must follow something which is basically artistic in nature, and your aesthetic sense would improve, your overall aesthetics will improve. तो जिंदगी में अगर सौंदर्य चाहिए, अगर आपको आनंद चाहिए, तो अपने हृदय का विकास कीजिए. लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज द सोल. दिखाई तो नहीं देती है किसी को भी, लेकिन ये है, हम सब जानते हैं, मानते हैं. अपनी आत्मा के विकास के लिए आप क्या कर सकते हैं? जो नेगेटिव चीजें हैं, दुर्गुण, शराब है, ड्रग्स है, स्मोकिंग है, उनको छोड़ना पहली शर्त है. और फिर सद्गुणों का विकास, गुड थिंग्स. धर्म हमारे लिए पारंपरिक तौर पे इसके लिए बताया जाता रहा है. मुझे नहीं पता आप कितने धार्मिक हैं, और मैं आपको किसी धर्म को फॉलो करने की कोई एडवाइस भी नहीं कर रहा हूं. मैं यहाँ धर्म के बाहरी स्वरूप की बात भी नहीं कर रहा हूं कि आप मंदिर जाएं और माला फेरते रहें और पूजा पाठ करते रहें. जब मैं धर्म बोलता हूं तो मेरा यहाँ पे मतलब है धर्म का मर्म, द एसेंस ऑफ रिलीजन, एंड इट इज सेम फॉर ऑल रिलीजन्स. सभी धर्मों का सार और मर्म एक है, जिसके केंद्र में आपकी नैतिकता है. सो अगर आप नैतिकता को अपने जीवन में उतारेंगे, इफ यू विल हैव गुड मॉरल वैल्यूज एंड यू फॉलो देम, तो फिर वो आपकी आत्मा के विकास में बड़ा सहायक होगा. इसी प्रकार यदि आप योग प्राणायाम को अपनाएंगे, मेडिटेशन को अपनाएंगे, अब ये चीजें किसी एक खास धर्म की बपौती नहीं है, वो पूरी मानवता के लिए है. ये आपके विकास को इस ढंग से प्रभावित करेगी जिसकी आज आप कल्पना नहीं कर सकते. अगर आप पूरी सिंसियरिटी के साथ योग, प्राणायाम, मेडिटेशन को लेंगे, so then you will have, it will have tremendous effect on the development of your overall personality. तो ये जो हमने बात की कि आप अपनी पर्सनालिटी को बेहतर बनाएंगे, तो आपका जो लेवल है, जो आपका रिसेप्टिविटी है, उस एनर्जी का जो आपके भीतर है, आपके अपने अंतःकरण में है, और पता है वहां कहां से आई? पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड, पूरा अस्तित्व, द एंटायर एग्जिस्टेंस, आखिर तो सारी बुद्धिमत्ता, सारी इंटेलिजेंस, सारा नॉलेज, सारा ज्ञान, सारा सौंदर्य, सारी समृद्धि, द एंटायर प्रोस्पेरिटी, ये सब चीजें इसी एग्जिस्टेंस में हैं, इस ब्रह्मांड में हैं, कहीं बाहर नहीं है उससे. नथिंग इज देयर विच इज नॉट इन द यूनिवर्स. You cannot even imagine anything which is not in the universe. सब कुछ तो वहीं पर है. आपका अंतःकरण उसी सौंदर्य, समृद्धि, बुद्धिमत्ता, विवेक के उस अक्षय भंडार से जुड़ा हुआ है, इन ए वेरी मिस्टीरियस वे. जैसे आपका लैपटॉप है, आपका कंप्यूटर है, वो www, वर्ल्ड वाइड वेब, विश्वव्यापी ये जो वेब है, जो अंतर्जाल है, उससे जब जुड़ जाता है, तो उस वेब में जितना कुछ भी नॉलेज है, वो अच्छा है, बुरा है, पौर्न है, या काम की चीज़ें हैं, सब्जेक्ट्स हैं आपके, स्टडीज़ के हैं, पोइट्री है, या कुछ और है, वट एवर द एंटायर स्टफ, देन यू गेट डायरेक्ट एक्सेस टू ऑल दिस स्टफ विच इज अवेलेबल ऑन योर वेब. उसके डिफरेंट साइट्स बनी हैं. पूरी दुनिया के वेब में जो कुछ भी है, आप उसको हासिल कर सकते हैं. ऑफ कोर्स सारा कुछ फ्री में नहीं है, उनके अपने प्रोटोकॉल्स हैं और उनके नियम हैं, कंडीशंस हैं, वो एक अलग बात है, बट इट इज वर्चुअली अवेलेबल टू यू. ठीक उसी प्रकार हमारे अंतःकरण में जो ऊर्जा है, जो मोटिवेशन है, वो कहाँ से जुड़ा हुआ है? द इनएग्जॉस्टिबल, इनफाइनाइट रिजर्व ऑफ ऑल द ब्यूटी, ऑल द इंटेलिजेंस, ऑल द
abundance, everything which you can imagine. तो वहां से आपको लेना है। और अगर आप अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं, इन चारों आयामों में कर सकते हैं, तो फिर आपका कनेक्शन सीधा वहां से जुड़ जाएगा, एंड यू विल हैव एक्सेस टू ट्रिमेंडस सोर्स ऑफ एनर्जी, और उसको आप कन्वर्ट भी कर पाएंगे पावर में, क्योंकि एनर्जी तो वैसे तो हमने कहा कि वो ऑलरेडी है, इट इज इन डोरमेंट फॉर्म, है ना। जैसे कुंडली हमारे सबके भीतर होती है, वो ऐसे कुंडली मार के बैठी हुई होती है वो शक्ति, जो स्पाइनल कॉर्ड के बेस पे, लेकिन वो किसी काम की नहीं है, वो डोरमेंट है। जैसे सांप सर्दियों में डोरमेंट अवस्था में चला जाता है, तो उसे आपको जगाना होगा। यू हैव टू अवेकन योर हिडन, इट्स नॉट हिडन, आई शुड नॉट से हिडन, डोरमेंट। यू हैव टू एक्टिवेट इट। द एनर्जी इज देयर ऑलरेडी, यू गो टू एक्टिवेट इट। और एक्टिवेट के लिए सिवाय कर्म के और क्या है, और कर्म का किस रूप में, किस फॉर्म में, वो मैंने बताया आपको इस्तेमाल करना है। ये जो 4 आयाम आपके व्यक्तित्व के हैं, इनमें से कुछ भी नहीं हो पाएगा अगर आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होगा। तो आप पढ़ते हैं, आप जब आते हैं स्कूल कॉलेज में, और ज़्यादातर पढ़ इसलिए लेते हैं कि भाई आपको डर होता नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। ये डर नहीं चाहिए, ये डर से की गई पढ़ाई किसी काम की नहीं है। ये आपके भीतर से ये भावना होनी चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए कि हमको पढ़ना है। और यही बात बाकी जो एक्टिविटी जिनकी मैंने बात की अभी आपसे, चाहे आपके शरीर को बनाने की बात है, आपकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात है, आपकी एस्थेटिक डेवलपमेंट की बात है, आपके मोरल डेवलपमेंट की बात है, उन सभी में चीज़ होनी चाहिए, डेडिकेशन एंड कमिटमेंट। यू कैन डू नथिंग विदाउट डेडिकेशन एंड कमिटमेंट, वरना आलस आ जाएगा। आपको जाना अभी एक्सरसाइज करने के लिए, और आप अभी आलस में पड़े हुए हैं कि चलो छोड़ो यार कल देखेंगे। अगर ये मानसिकता रहेगी तो दोस्त नहीं होगा। तो सेल्फ डिसिप्लिन, जब सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होता तो मालूम है क्या होता है, यू स्टार्ट ड्रिफ्टिंग। जैसे हवा चलती है ना, और किसी पेड़ से सूखा पत्ता टूट के उसमें आ जाए तो क्या होता है, जहां हवा चाहे उसे उड़ाकर ले जाएगी, ड्रिफ्टिंग। आप लगे हुए हैं सोशल मीडिया पर, टाइम हो गया है क्लास में जाने का, आप उसमें लगे हुए हैं कि कोई बहाना बना देंगे। आप लगे हुए हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चैटिंग करने में, और यहाँ आपको एक्सरसाइज करने का टाइम हो गया, बाद में तो जिम बंद हो जाएगा या दौड़ने का टाइम हो गया है। अगर आप इस ढंग से चलेंगे तो यू विल ड्रिफ्ट अवे। फिर आप उन चलती हुई हवाओं के भरोसे होंगे, जहाँ वो ले जाएगी, कहाँ आपको गिराएगी, किसी गंदगी में लेके जाएगी, गंदे नाले में गिराएगी, आपका उस पर कोई नियंत्रण नहीं। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड इज टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, डोंट ड्रिफ्ट। And in order to take charge of your life, one key that I can tell you is self-discipline, आत्मानुशासन। क्योंकि बाहर के अनुशासन काम नहीं करते हैं। अभी तो आप इस उम्र में आ गए हैं, आप अपने माता पिता की कितनी बातें मानते हैं, वो कितना भी अच्छा कहें, कितना भी आग्रह करें, आप सुन के इग्नोर कर देंगे। आपके टीचर्स आपको कहेंगे, पढ़ाएंगे, लेकिन वो भी आपको एक सीमा तक ही कह सकते हैं। आप नहीं सुनेंगे तो क्या करेंगे, वो कहेंगे भैया ठीक है तुम्हारी मर्जी, जिंदगी तुम्हारी, आफ्टर ऑल यू हैव टू लिव योर लाइफ, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। तो सेल्फ डिसिप्लिन इज द की, और उसके साथ ही आता है ये कमिटमेंट एंड डेडिकेशन जिसकी मैंने बात की। यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित नहीं हैं, तो जो आपके गोल्स हैं वो दिवा स्वप्न ही रह जाएंगे, वो डे ड्रीमिंग बन के ही रह जाएंगे। अनलेस यू हैव डेडिकेशन एंड द कमिटमेंट बैक्ड बाय सेल्फ डिसिप्लिन, आपके सपने कभी सच नहीं होंगे।
ये सब करते हुए अब समय देखिए, समय बदलता है, टाइम इज चेंजिंग, और खासकर आप जिस फील्ड में हैं वहाँ तो ये आना ही आना है। टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग, टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर होती जा रही है, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, दिस ब्रिंग्स यू न्यू चैलेंजेस एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज। आज जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं या मैनेजमेंट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अक्सर सुनते होंगे कि भाई अब एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आने वाले सालों में ड्राइवर बेरोजगार हो जाएंगे, डॉक्टर बेरोजगार हो जाएंगे, इनकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी, वकीलों की ज़रूरत नहीं रहेगी, और न जाने कितने सारे प्रोफेशन के बारे में कहते हैं कि भाई सारा काम एआई से हो जाएगा। मुझे लगता है इट्स एन एग्जेगरेशन, शायद ऐसा नहीं होगा, लेकिन जो बात पक्की है कि कुछ चैलेंजेस तो आएंगे, एंड दे विल नॉट बी स्मॉल चैलेंजेस, दे आर गोइंग टू बी challenges of serious nature. So you have to prepare yourself for the time to come, to prepare yourself to successfully face the challenges and to make best possible use of the opportunities जो लेके आपके सामने आएंगी। तो उसके लिए तैयारी चाहिए, मानसिक। अभी मैं जो थोड़ी देर पहले आपसे बात करता इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का, उसका एक मतलब ये भी है, केवल जो सिलेबस में उसको पढ़ लेना काफ़ी नहीं है। व्हेन आई वाज trying to give you the hint of adding something to your intellectual activity, that is this: prepare yourself for the time to come. It is true that the rate of technological advancement is really high, very rapid, but you have to be prepared for it. You have no option. अच्छा, इसको आप कैसे, क्योंकि ये तो अनसर्टन है, दिस में नॉट कम अबाउट इन द नेक्स्ट 10 years, तो और वो तो पूरे दुनिया की बात है, पूरे विश्व की समस्या है, या कहिए उनके लिए अवसर हैं। एज एन इंडिविजुअल आप क्या कर सकते हैं? आप ये कल्पना करें, इमेजिन करें, तो ट्राई टू हैव ए विजन रादर, कि अगले 3 से 5 सालों में आप क्या कर रहे होंगे, कहाँ पर होंगे। इस बात का अगर एक रियलिस्टिक चित्र आपके सामने आ जाता है, तो तैयारी में बड़ी आसानी होगी। अभी आज जिन्होंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया 4 साल में डिग्री हो जाएगी, जिन्होंने मैनेजमेंट में लिया उनकी 2 साल में हो जाएगी। तो जब हम कहते हैं कि अगले 3 से 5 सालों में आप कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे, उसके बारे में आज सोच लीजिए। वो डिटेल में नहीं, वो तो करेंगे तब आएगा, लेकिन विजन, भविष्य का एक चित्र आपके अगर मस्तिष्क में रहे, तो फिर उसके लायक तैयारी अपने आप होती चली जाएगी, वो करना बड़ा आसान होगा। अब जैसे मैं जिस अवस्था में आप हैं, the stage of life in which you are there, जनरली आप क्या करते हैं? आप कहेंगे साहब मुझे बीटेक के बाद में अब कुछ ऑप्शन है मेरे सामने, प्लेसमेंट के लिए जो कंपनी जाती हैं उनके इंटरव्यूज़ में बैठेंगे, नौकरी मिलेगी, नौकरी ज्वाइन कर लेंगे, किसी कॉरपोरेट सेक्टर में अपना करियर बनाएंगे। कुछ लोग हैं जो बोलेंगे साहब हम तो जो है हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे, बीटेक मेरे लिए काफ़ी नहीं है। मैनेजमेंट एमबीए करने वाले सोच सकते हैं कि हमको तो अभी रिसर्च में भी जाना है। there are different options. Somebody may be ambitious enough So sorry to interrupt. We have a question for you. Pardon? We have a question for you, sir. Oh, yes. Sir, let me discuss this first. Okay. So the question is like, what advice would you give to a person who is preparing for civil services and wants to become an IAS officer? मैडम मैं उसी के ऊपर आ रहा था एग्जैक्टली। Okay, sir. कहता नहीं कि आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। When I was talking of the various different routes which students take at the end of their exams, placement, higher studies वगैरह, उसी में नेक्स्ट है सिविल सर्विसेज इज वन ऑफ कोर्स। आई मीन यू मे लाइक टू गो इन फॉर सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और उसमें जब आप इंजीनियरिंग और एमबीए के बाद किसी छोटे मोटे में तो जाएंगे नहीं, आप किसी सबऑर्डिनेट सर्विस में जाना पसंद नहीं करेंगे, डेफिनेटली यू विल एम फॉर द सिविल सर्विसेज।
दैट इज वन ऑप्शन। अब उसकी तैयारी करनी है कैसे, ये तो मैडम अपने आप में एक इट्स अ होल टॉपिक इन इटसेल्फ। आई थिंक आई कैन नॉट डू जस्टिस इन a few minutes on it. For that, you will have to hold another session. Yes, so definitely we'll call you. We'll call you in the college and offline physical. So I have got very little time. I don't know how much time is left for me. अभी स्टेज पे मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि जब ये डिफरेंट ऑप्शन आपके सामने हैं, आपके पास अगर इनोवेटिव माइंड है तो आप अपना कोई स्टार्टअप करने की सोच सकते हैं। और अगर आप एक ऐसे परिवार से आते हैं जिनके पास बड़ा फ्लरिशिंग बिजनेस है और आप ये कंपैरिजन करें कि भाई जिस किस्म की नौकरी मुझे मिल सकती है उसकी तुलना में तो आई विल बी बेटर ऑफ ज्वाइनिंग माय फैमिली बिजनेस, तो आप वो कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस। The point I am trying to emphasize at this stage is you must have an option. You must have vision. What I am going to do in the next 3 to 5 years, ये बात आप आज सोच लीजिए। Not in great details, but the basic idea must be there in your mind, and it can be subject to change in view of the further things that you learn, क्योंकि it's a journey of knowing oneself also. विद्यार्थी जीवन में आप अपने आप को भी तो जानते हैं, आप अपने आप को डिस्कवर करते हैं। आज आप जितना जानते हैं, 1 साल 6 महीने के बाद आप अपने आप को और बेहतर जानेंगे तो आपको लगे कि आज जो मैंने सोचा था अपने भविष्य के बारे में उससे बेहतर ये रहेगा, इट विल बी समथिंग डिफरेंट। तो उससे गुंजाइश रखिए, लेकिन रोज भी मत बदलते रहिए। You should have a vision about your future today, subject to change in the light of the new things that you learn and the experience that you will have in the years to come. But in any case, you must make a final decision in the pre-final year of your study. ताकि जब फाइनल ईयर में आ जाएं तो आप उसको फर्म अप कर सकें और जब निकलें अपना डिग्री लेकर के इमीडिएटली उस पर काम करना शुरू कर दें। इनडेफिनेट टाइम तक उसे टालिए मत। मैंने कहा फिर आपकी हालत वही हो जाएगी जो हवा में उड़ते हुए सूखे पत्ते की होती है। यू हैव टू हैव ए विजन फॉर योर फ्यूचर। और बहुत लंबा सोचने की भी जरूरत नहीं है। ये नहीं कि आज ही आप तय कर लेंगे भाई 20 साल के बाद आप क्या करेंगे, 25 साल के बाद क्या करेंगे, क्योंकि उतना लंबा आप नहीं देख पाएंगे। वो स्पष्ट नहीं देखेगा। इट विल बी हेजी, इट विल बी समथिंग वेग। तो उतना दूर का नहीं, लेकिन एक जो फ्यूचर आप देख सकते हैं 3 to 5 इयर्स में इस स्टेज पे आपको कह रहा हूं, वो विजन जरूर होना चाहिए। क्योंकि विजन विश नहीं चाहिए, डे ड्रीमिंग नहीं चाहिए, विजन चाहिए और विजन के साथ में गोल सेटिंग हो। और जब गोल सामने होगा, अपने भीतर की एनर्जी को कैसे आप टैप करेंगे, उस एनर्जी को आप कैसे डायनेमिक पावर में कन्वर्ट कर सकेंगे, इस बात की जब समझ होगी, वो पर्सनालिटी जब आपके डेवलप होगी इन चारों डायमेंशन पे, फौलाद सा आपका शरीर होगा, एक वैज्ञानिक का मस्तिष्क होगा, एक कलाकार का हृदय होगा और एक संत की आत्मा होगी। जब आप अपने आप को पूरी तरह से विकसित कर लेंगे तो वो जो अनंत ऊर्जा इस ब्रह्मांड की है, पूरे अस्तित्व की है, वो आपकी पहुंच में होगी और आप उसका प्रयोग कर पाएंगे अपने जीवन के उद्देश्यों को हासिल करने में। दोस्तों, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और मैं चाहता हूं कि आपका भविष्य उज्जवल हो, आपका भविष्य स्वर्णिम हो, सुनहरा भविष्य आपका हो। जहां पर आप आ गए हैं, बड़ी किस्मत आपकी अच्छी है और आपके प्रयास भी हैं। ये कर्म और भाग्य, मैं इस पर कभी फिर कह सकता हूं, अपने आप में ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आप सबके सुंदर, सुखद, समृद्ध और सफल भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। So thank you so much for your valuable time and such a motivating session. सर, आपने बच्चों को ना अपनी खुद की एनर्जी के बारे में बताया, बहुत ही ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच सर।
स्टूडेंट्स, सर ने बिल्कुल राइटली बोला है कि वी ह्यूमन बॉडी हैव अ ट्रेमेंडस पावर। हमारे क्या जरूरत है, हमें उस एनर्जी, जो हमारी एनर्जी है उसको जगाने की जरूरत है, उसमें एक्शंस डालने की जरूरत है, जब वो पावर में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड एक्शंस के लिए क्या करना है हमें, सर ने जैसे बताया कि हमें अपने पहले हमें गोल डिसाइड करना है। जब हमारा गोल डिसाइड होगा, हमारा विजन हमें पता हैगा, तो जो भी हम एक्शन ले रहे हैं उस दैट शुड बी बैक्ड अप बाय डिटर्मिनेशन, सेल्फ डिसिप्लिन। ये सब चीजें होनी चाहिए, तो हम एक्चुअली जो हम चाहते हैं वो हम अचीव कर सकते हैं। एंड साथ के साथ जो हमारी ह्यूमन बीइंग की जो 4 डायमेंशन है, जो सर ने बताया, बॉडी, माइंड, सोल एंड हार्ट, इनको अगर हम डेवलप करेंगे, तो जो अगर हमने इनको अच्छे से डेवलप किया अगर, तो हमारी जो डोमेंट एनर्जी है वो मतलब पूरी ब्रह्मांड की एनर्जी हमें हेल्प करेगी हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए। तो हमें उस लेवल तक अपने मतलब, क्योंकि हमारे पास एनर्जी तो बहुत है, सर ने जैसे बताया हमारे पास इतने सारे न्यूरॉन्स है, उनकी अगर एनर्जी की बात करें तो वी हैव ट्रेमेंडस एनर्जी। बस उसको जगाना है, उसको सही डायरेक्शन में यूज करना है, तो विल डेफिनेटली अचीव अ गोल और हमारा ब्राइट फ्यूचर होगा। सो बस सर ने इस चीज को बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। सर, वी लव्ड योर सेशन, इट वाज सुपर एक्साइटिंग, एंड we'll definitely call you to a college campus for a physical interaction with our students so that they get motivated. So thank you, sir, once again for your session. Thank you. All the best. Thank you, sir. Dear students, we'll start our next session at 12:30, right? So you need to be connected. We'll resume again at 12:30. Is it clear, students? Kindly message in the chat. Yes or no? Hello. मैम चैट डिसेबल है। अच्छा, chat is disabled. So we'll resume at 12:30, right? यस मैम। Okay, dear. Thank you. ओके मैम। Okay, yeah, okay. माइक ऑन मत करो, नहीं तो किक कर दिए जाओगे। अखिल। हेलो हेलो गौरव। माइक ऑन मत कर भाई, नहीं तो किक हो जाएगा। ओके ओके। इंस्टा आईडी दे दो। भाई क्या कहाँ दे दूँ इंस्टा आईडी दे दो। किसकी आईडी दे दे? एंजल प्रिया। भाई तुम ही हो ना एंजल प्रिया, हमें पता है भाई, तभी तुम दोगे। नहीं रहने दे। अमन भाई। लो एंजल प्रिया आ गई। अमन कुमार।
वह पूछ लेना बीवी वाले हैं। अरे तो कैसे हैं आप लोग?